Yes, sir. How are Akash, you? tell me how it's going on. How's the preparation? I've started preparing from last 2 months now. Okay. July and August. My VARC is comparatively better than Quant, Okay. and I've been viewing your LRDI course, that comprehensive course, and I've been practicing the LRDI also from last Okay. 1 month. At least 5 sets I'm doing every day. Fine. So that has actually improved my LRDI. So only concern is the quant section for me. Hmm. So how much is scoring in quant section? How much are scoring here? How much are scoring here? I'm audible. Hello? Wait, Akash, just wait, huh? Just wait, okay. Yes, sir. You just wait for 1 minute. Okay? I think connection is fluctuating. Just wait for 1 minute, right? Yes. So how much is scoring in quant, Akash? Quants, I'm after these 2 months of studies, I'm getting approximately 8 to 10 correct 8 out to of 10, 10. correct. Yeah, Okay. I attempt approximately 15 to 16 questions, and I get 4 to 5 wrong and 8 to 10 correct. Okay. So yeah, and I'm not able to attempt more questions also. Approximately maximum is 20. Okay. And LRDI? LRDI, now as I'm doing lots of sets daily, at least 5 I'm doing. So Okay. I'm able to solve like almost 3 to 4 sets in the exam. Okay. So it is 35 plus for at least From 30 to which 30 sources you're practicing? From where you're practicing? from Unacademy. I'm seeing your old videos for Actually, some sets. you're on Plus, Unacademy Plus. Yeah, I'm plus, yes. Okay, okay. So we're not talked about. Have we talked earlier? No, this is the first time. I've taken Okay, plus like last month. okay, done last month. Okay, okay, fine. Yeah. Here you go. I'll tell you. In quant, you can just move on, right? Well, basically, quant may you can just start off with like yeah. Are you following that round one, round two strategy? For which? Round one, round two strategy. Are you following? No, actually, क्या होता है कि once I start solving questions, some 5 to 6 minutes go in one question. Hmm. So like Look, instead of actually, that, I took a session earlier on how to attempt mocks, right? So basically, what I told in that session, you can watch in special classes. Okay, I'll tell you a brief about it. So this mock has to be right, has to be basically mock or cat. Quant has to be attempted in 2 rounds actually. Okay. So basically, what happens now? It's a common experience, right? Because I've given I've given cat a lot of times. So actually, what happens even if you're good at quant, right? So let's say there are 34 questions. Okay, if I start solving for question number 1, 2, 3, 4, 5. So let's say I'm solving continuously, right? But I see, okay, once I see reach question number 20, let's say suppose, and I see that 45 minutes have gone. Okay, so I a bit of panic actually, right? Because okay, I'm 20 questions I've solved, all fine, that's okay, right? But I've not seen 14 questions. Okay, and now the quant was of 60 minutes actually. And it didn't say 14 questions actually in that, right? So now I start panicking a little bit. Okay, even if I'm very good, I'll just try to search for the questions which I can do earlier, right? And in that panicness, I lose a lot of time in last 15-20 minutes. Okay, so that's why to avoid that panicness, we have strategy like we have given that cat a lot of times, and all my students are giving, right? Just divide this quant into 2 rounds. Okay, the first round basically will go live. In the first round, you have to attempt the paper. It's just a run through, right? Basically, it will be intersection of what? A intersection B, I call it, right? A means the questions are one-liners or two-liners, and B means you are familiar with this question, right? Then only you attempt those questions. Otherwise, don't attempt it, right? And start from the first question. You see a 3-4 liner question or 5 liner question, and you just skip it. Okay, even you don't see it is from which chapter actually, you just skip it, right? And like this, somewhere between 17 to 20th minute, let's say you end on question number 34. Okay, so if you're in very good practice with questions in last 3 to 4 months of cat, you're doing good in mouse, right? So you'll see that basically in cat you'll find some very easy moderate questions, right? So in first to those 18 to 20 minutes, you can
solve easily 10 to 12 questions actually, right? And that gives you a real boost from there. Okay, so first 20 minutes, 12 questions done. It's a great advantage to have actually. Okay, and after that, if you solve those 12 questions, right, and then you feel confident also, right? That adrenaline rush is there. Okay, that okay, that's fine. You've done the 12 questions, and then there were around 25 questions, and there about 99.5 mark, right? So in इतने confidence में इंसान 3-4 क्वेश्चन solve कर लेता है. ठीक है, just try to so make sure that in first 20 minutes, right, you're solving those 10-12 questions. This may not exactly replicate in mocks, because mocks में क्या होता है? In mocks, what you'll do, because easy and moderate questions they don't give in mocks, right? Basically I used to set the set previous year mocks also, right? So we don't give easy and moderate questions mocks, right? For example, मान लो कि even CAT में ऐसे question आए हैं that find the in radius of triangle having sides like 24, 30 and 36, this kind of questions, right? So these are very very easy category, but you'll not find this kind of question in mocks actually, right? So that's why, but it's a habit, right? If you don't apply this in mocks, CAT may directly will not be comfortable applying it, right? So make sure that you're applying a strategy in mocks also. In CAT, it's the number is around 12 questions after 20 minutes. In mock, it could be around only 5-6 questions, but that's fine, right? But that's a habit you have to do, right? Otherwise, even if you're doing very good in this mocks, but in CAT, you won't be easily able to replicate it actually. Okay, so in CAT, you want to replicate that situation. That's the final day. You have played whole league matches well. फाइनल जाके हार गए, ठीक है? तो वो काम नहीं करना है, राइट? जस्ट बी मेक श्योर दैट कि ये जो स्ट्रैटेजी जो डीडे के लिए होगी, आप उसको फॉलो कर रहे हो इन मॉक्स आल्सो, ठीक है? So what is the maximum time to spend on a question? Suppose there is a question of reciprocal. 3 minutes. 3 minutes is the maximum time. I feel that I can solve it, but while 3 minutes, that's fine. 3 minutes. Then if I'm not able to solve, should I leave it or? 3.5 minutes छोड़ दो उसके बाद, ठीक है? वो leave it, right? तो वही बता रहा हूँ, this the thing will be minimized, right? If you have 20 minutes and 10-12 questions you're able to solve in first round, so round 2 में this thing will be minimized actually, ठीक है? कि you are attempting the questions and then you are attempting a question for not too long, right? Because you know that you're already have done 12 क्वेश्चन, राइट? कहीं ना कहीं माइंड में है कि 14 to 16 अगर मैंने और सॉल्व कर लिया था इन द रेंज ऑफ 99.5 प्लस, राइट? तो 14 to 16 और सॉल्व करने का मतलब है दैट यू आर लीविंग आल्सो 6 to 8 क्वेश्चंस, राइट? So just try to leave those bigger questions. अगर टाइम बच गया तो we'll see in last 10 minutes, right? Otherwise just leave it. Okay, so make sure that your first 50-55 minutes utilizing actually very good, because last का 5-10 minutes थोड़ा panic हो ही जाता है, ठीक है? So that's very important to utilize those first 50-55 minutes, and whatever you know, just you have to attempt it, right? So basically just follow this 2 rounds of strategy. It should be good enough in quant, apart from a good knowledge gain, right? So अब तो मेरे videos classes कर ही रहे हो, so you don't require any book apart from that, right? The quant में basically you finish all the lectures, है ना? And after that all उससे बाहर के question नहीं आएगा. You can just attempt it round and round basically, and what should I say, basically just revise all the concepts, okay, twice or thrice, and then give mocks. तो basically क्या करो कि mocks देने के बाद make a separate notebook, ठीक है? Let's say you buy a 400 pages notebook, है ना, quant के लिए. First 80 pages for arithmetic, next 80 pages for geometry, next 80 for PNC probability binary theorem, next not so 80 pages ज़्यादा हो जाएगा PNC probability के लिए, right? मतलब around that 80 page for numbers, like they divide into 5 parts. And whenever you get a very good question from internet or mocks, right, or somewhere else, right, in classes, just note it down, ठीक है? So what happens, because in this what you're doing very good in mocks, that's one way, right? But second way is also that it is very point when the CAT is around 10-15 days away, right? So suppose 29th number को CAT है, and after 15-20 number, right, you don't want to study new things actually, ठीक है? So 15-20 के बाद you don't want to study new things, right? But you also want to revise those things where you're getting stuck and in last 5-6 months, right? So you have to just, you can open a notebook and you can say that, okay, in last 3 months I formed a good 300 question bank, right? And this is a good question bank because these are the questions which you felt it is good, or you got it stuck, right? So in collection of mocks, in groups, in telegram groups, right, a lot of questions are there, right? You find a good concept, just note it down and revise it, okay? So this will take care of quant actually, okay? This should be good enough for quant, okay? You solve these questions, right? It should be good for enough for quant, ठीक है? तो इसलिए quant में issue नहीं होना चाहिए फिर. Okay, sir, and about LRDI, so what should be our approach? Like
once you go in that LRDI section कि पहले सेट देखना है, सॉल्व करना है थोड़ा, या फिर which sets we are familiar with we should go about solving them? देखो, बेसिकली यू ट्राई टू फाइंड आउट कि विच इज योर कंफर्ट जोन, है ना, कैसा सेट देख के आपको अच्छा लगता है, राइट? इट गिव्स अ गुड फीलिंग एक्चुअली, इट्स ऑल अबाउट इंस्टिंक्ट, देयर इज नो पर्टिकुलर रूल इन एलआरडीआई, ठीक है? जैसे मुझे क्या है ना, इफ आई गिव कैट, राइट, सो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दोस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, जो छोटे सेट्स होते हैं, स्मॉल सेट्स, नंबर बेस्ड सेट्स, स्क्रिप्ट अरिथमेटिक बेस्ड सेट्स, क्वांट बेस्ड सेट्स, राइट? तो मुझे पता है कि मैं कितना भी टफ फील होगा ना, आई जस्ट पिक अप दोस सेट्स, आई फील कॉन्फिडेंट अबाउट इट, एंड मुझे पता है मैं सॉल्व कर लूंगा, भले 4-5 केसेस बन रहे हो, राइट? सो आई लव टू मेक केसेस एंड आई गो अबाउट इट, ओके? सो ऐसे ही बहुत लोग का ग्राफ बेस्ड होता है, बहुत लोग पाई चार्ट्स, बार चार्ट देके कंफर्टेबल हो जाते हैं, राइट? So you just in this mock phase you find out which kind of sets give you a good comfortable level, right? So आपका comfort zone क्या है? And then Sometimes don't waste too much time in scanning sets, right? Just एक फटाफट सेट देख लो, क्योंकि 8 सेट्स वहां की कैट में जब भी, बिकॉज देखो प्रैक्टिकली बात करोगे, a person who has given exam, right? So I should talk practically कि जैसे ही वो क्वांट खत्म होके एलआरडी आएगा ना, तो सडन अगेन फिर से एड्रेनलिन रश बढ़ जाता है, ठीक है? सडनली व्हाट काइंड ऑफ सेट्स आर देयर, कैसा है, क्या है, नहीं है, ठीक है? वो होता ही है, जस्ट calm down yourself, right, at the start of LRDI section, take 10 seconds of breathing time, ठीक है? It's fine, and let's go about it, right? Because you have solved 4 and 5 minutes before, right? So make yourself, पहले ही बहुत जरूरी है अपने को calm down करना 10 seconds तक, ठीक है? जब भी जो पेपर स्टार्ट होता है तो, राइट? उसके बाद नेक्स्ट 40-50 सेकंड जस्ट ट्राई टू गो स्कैन थ्रू वन सेट, राइट? सेट नंबर क्वेश्चन 1 पे क्लिक किया, देखा बहुत बड़ा सेट लग रहा है, छोड़ दिया। फिर क्वेश्चन 5 पे, बिकॉज 1 to 4 सेम सेट होगा, राइट? फिर क्वेश्चन 5 पे क्लिक किया, राइट? देखा कि अच्छा ये भी बड़ा सेट लग रहा है, छोड़ दिया। फिर क्वेश्चन 9 पे आए, राइट? देखा कि ये छोटा सेट लग रहा है, कुड बी अटेम्प्टेड, राइट? सो मतलब बेसिकली छोटा से ऐसा, इट इज नॉट नेसेसरी दैट स्मॉल सेट है तो इजी होगा, ऐसा नहीं है, राइट? बट आई फील गुड व्हेन आई सी स्मॉल सेट्स, ठीक है? मैं अपना बता रहा हूँ। द सेम वे यू फाइंड योर कंफर्ट लेवल, ठीक है? एंड उसके बाद ना एक फटाफट 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 8 सेट्स पे क्लिक कर लिया, राइट? एंड जस्ट सेलेक्ट 2-3 सेट्स, ठीक है? कि जो आप फर्स्ट 20 मिनट्स अटेम्प्ट करोगे, राइट? तो मे बी ऐसा पॉसिबल है दैट यू स्टार्टेड विद वन सेट, ओके, एंड यू आर अटेम्प्टिंग दैट सेट एंड यू कुड नॉट सॉल्व इट, राइट, इन फर्स्ट 5-6 मिनट, छोड़ दिया, ठीक है? मान लो सेकंड सेट मिला, वो हो गया, है ना? बिकॉज when you pick sets in your comfort zone, there's high probability to solve it, right? There's more probability that you solve it in the first chance actually, okay? So let's say कि अगर मैं 3 sets select किया है, 3 sets of my comfort zone, so I can solve 2 sets in first 20 minutes, right? And that's again is a very big positive point, okay? If you can solve it, right? So make this sure that you're solving those 20 in first 20 minutes. Try to make this kind of mindset strategy ki haan, we are going to solve 2 sets actually. That will be good help, okay? And then you can just plan it out, right? Because there can be no particular rule, right? It's an exam, it's a good level exam, तो इतना हम लोग बहुत multiple rounds नहीं बना सकते, ठीक है? But हाँ, we can have we give a good start, right? And then we can actually move on in the same phase, right? In the same pace actually. So अगर 20 minutes में we have done 2 sets, so I'm quite confident that with good confidence level हम लोग 5 sets भी solve कर लेंगे exam में, ठीक है? So that should be going about LRDI. So don't waste too much time in scanning, ठीक है? क्योंकि मैं बहुत लोगों को देखता हूँ कि बहुत लोग, I don't know, many YouTube videos are available or many people tell about this कि set find करो, see कि उसमें which set is a value putting set, which set is arrangement set, which set is distribution set. इतना टाइम नहीं होता, इधर 5 मिनट स्कैन कर निकल जाएगा, 5 मिनट स्कैन करने में, ठीक है? तो be practical about it, right? Sometimes we feel that this set is easy and हम घुस जाते हैं करने में, 5-10 मिनट जाते हैं, फिर पता चलता है कि नहीं हो रहा है, और बड़े दिखने वाले सेट इजी होते हैं कभी कभी। हाँ होते हैं, तो मैंने कब कहा कि बड़े सेट नहीं करना है? I never told that, right? It's all I wanted to give a good start actually, ठीक है? कि first 20 is the same like in quant round 1, ठीक है? LRDI मैंने ये ऑब्जर्व किया है after giving cat in the recent pattern, right? कि if you are solving, अगर आपके first two sets हो जाते हैं, ठीक है? और हमेशा स्टार्ट तो स्ट्रेंथ से ही करना चाहिए ना, स्टार्ट शुड बी ऑलवेज स्ट्रेंथ, राइट? तो आपका स्ट्रेंथ क्या है, यू ट्राई टू फिगर आउट इन मॉक्स। मैंने वही बोला कि कुड बी क्वांट बेस्ड सेट्स, कुड बी लॉन्ग पजल्स भी बहुत लोगों का स्ट्रेंथ होता है, कुड बी ग्राफ बेस्ड सेट्स, पाई चार्ट बार्डर लोगों को इजी लगता है, राइट? तो जस्ट फिगर आउट योर स्ट्रेंथ, राइट, and scan those kind of 2-3 sets in starting, ठीक है? start from that, right? So just first 20 minutes, right? उसके बाद अपनी sets pick करो, you see there's a bigger set, right? Try to read for 3-4 minutes, so data से समझ में आ गया, that's fine,
ठीक है, नहीं आया तो सेट स्किप कर जाओ, ठीक है, इट्स फाइन राइट, बट इट्स नॉट अ क्वांट क्वेश्चन राइट, तो देख के स्किप नहीं कर सकते, ठीक है, देख कर सेलेक्ट कर सकते हैं, वी कैन सी एंड सेलेक्ट बट वी कांट सी एंड स्किप एक्चुअली राइट, क्योंकि बहुत टाइम smaller sets also have got lot of cases, बहुत time bigger sets also have got less number of cases right, so 3-4 अगर कोई बड़ा सेट भी दिख रहा है तो हमें 3-4 मिनट पढ़ना ही पड़ेगा, 3-4 minutes राइट, एंड इट्स फाइन परफेक्टली, इसलिए मैं बोला कि इसलिए देखोगे इन LRDI 4 to 5 sets is optimum, people solving between 4 to 5 sets get around 99-99.5 in CAT right, तो यही optimum है right, so just try to उसे we talk about probability right, तो हम इतने सारे सेट्स कर रहे हैं क्लास में, doing almost 400 sets right, तो इन सेट्स को if you practice just once or twice right, so it's very high chance that you can get a familiar set also, ठीक है, तो भी एक प्लस पॉइंट है राइट, अगर कोई ऐसा मिल गया तो जस्ट आइसिंग ऑन द केक राइट, ठीक है। हुआ था ऐसा हुआ था, बताता हूँ, इसलिए मैं बोलता हूँ ऐसा हुआ था इन कैट 18 में ना, आई वाज टेकिंग वन वर्कशॉप इन कैट 18 राइट, जस्ट 1 month बिफोर कैट, और इन द वर्कशॉप आई जस्ट वाज टीचिंग मैजिक बॉक्स सेट, ठीक है, मैजिक बता दो मैजिक बॉक्स, ठीक है, क्या कैसे बनता है 3 क्रॉस 3 5 क्रॉस 5 कैसे बनाते हैं राइट, जो मैंने पता क्लास में बताया, सडनली कैट 18 में आ गया, एग्जाम में आ गया, आई डिडंट एक्सपेक्ट इट राइट, तो अब व्हेन पीपल सी इट इट्स लाइक वाओ, जिनको आता था जिन्होंने क्लास किया था हार्डली 2 मिनट्स में सेट को कर लिया राइट, तो वन कैट सेट इन 2 minutes राइट, समझ रहे हो ना व्हाट काइंड ऑफ एडवांटेज यू विल हैव राइट, तो ये प्रोबेबिलिटी कब ऐसे ही कैट 90 में भी हुआ, स्क्रिप्ट अरिथमेटिक, तो हम लोग पढ़ते रहते हैं स्क्रिप्ट अरिथमेटिक हमेशा है ना, सो वी सी देयर आर सेट ऑफ स्क्रिप्ट अरिथमेटिक जिनको आता था दे जंप्ड ऑन टू इट राइट एंड दे सॉल्व्ड इन 5-6 minutes, तो ऐसा होता है राइट, सो इफ यू बट ये कब होगा when you're solving more number of sets, okay, so the probability will be higher to get a familiar set right, and even if you're solving, even if you don't get any familiar set right, still by solving more number of sets you will feel like very confident and your mind has actually reached that level from where you can attack new sets also right, so that's why focus on doing more number of quality sets, okay, yes, tell me Akash, और बताओ issue. Actually, that's it. But any suggestion for VARC also? It's long time I give CAT यार, मतलब आया था मेरे को VARC 98-99 आया था, CAT 13 या 14 का बात है, बट इसलिए I have not been touched, but yeah, basically मैं ये बोलूँगा that it was kind of a whatever percentile I got to get a forced percentile right, क्योंकि मैं I know that my VARC was not good, so I just मतलब I just kind of told myself कि last 90 days बचा हुआ है, let's solve 5 or 6 RCs every day, ठीक है, मन करे नहीं करे जो राइट, जस्ट सॉल्व 5 वर्सेस एवरी डे, ठीक है, एंड मोस्टली कैट में यू गेट आरसीज एंड पैराजम्बल्स ओनली राइट, सेम वाज केस 5 years बैक आल्सो, 6 years बैक आल्सो राइट, सो एट दैट वही क्या मैंने किया, सो एवरी डे वाज लाइक सुबह उठ के मतलब आई बेसिकली होता है ना व्हेन यू ईट फूड राइट, सो थिंग्स यू डोंट लाइक यू ईट एट द स्टार्ट, तो मैं वही करता था, बस आई गेट अप इन द मॉर्निंग, जस्ट फिनिश 5 आरसीज एंड 10 पैराजम्बल्स, नाउ आई फील फ्री फॉर द डे, ठीक है, अगर डे खत्म हो गया मैं आराम से whatever I like to do right, but वो करना है, I knew that that without doing that I can't do it right, so same thing, so I was doing it, so basically यही, so that strategy actually worked, okay, because I was in very high practice in last 80-90 days in VARC, okay, last 90 days and I solved more than 400-500 RCs in this time, especially of mocks, ठीक है, तो mocks में अच्छे RCs होते हैं right, so basically in CAT also it worked actually, that strategy right, so if you are already good at VARC it's fine, if you're not good at VARC just practice more, ठीक है, leave everything, watch lot of videos, बहुत सारे क्लासेस फैकल्टीज के अवेलेबल है राइट, उनका टेक्निक्स देखो क्या क्या है, हाँ, मर्ज फ्यू टेक्निक्स ऑफ VARC राइट, एंड देन जस्ट प्रैक्टिस मोर राइट, बिकॉज VARC कैसी चीज है ना कि मेरे को लगता है कि मॉक्स देने से ना VARC बहुत इंप्रूव होता है राइट, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एनालाइज मॉक, ठीक है, स्पेशली इन VARC में ना, एनालाइज का मतलब क्या होता है, लेट्स से कि यू and analyze this mock same day only right, so suppose क्या हुआ कि आपने given a mock from 9 to 12 today, okay, सबसे फर्स्ट एनालाइज करो VARC सेक्शन को राइट, तो मान लो कि सपोज VARC you attempted and out of 25 question let's say 10 questions were wrong right, still score is good, you did not bad right, but you have to analyze it, ठीक है, तो आपको पहले वो एनालाइज करना है that the questions which you marked wrong right, why did you mark it wrong, ठीक है, मतलब what was your thought process at that time when you're marking that question right, so that will happen when you're very fresh from a mock right, so just after mock analyze VARC सबसे पहले, ठीक है,
LRDI बाद में भी कर सकते हो और क्वांट को, राइट, बट वीआर से पहले कर लो. So आपको याद रहेगा कि ओके, in marking this question my logic was this. Okay, I took out this inference from RC or this from question, right? Maybe or this is paragraph, anything, right? So and then you will see that okay, the questions, the solution is more logical. Oh, they wanted to go in me this way. Okay, just mark that point. Anything you mark it, right, write it somewhere, right, or try to remember it for more time. This is a mistake I'm doing, right? So that's why analyzing VRs is very important, right? ठीक है, क्वांट चलो ठीक है, क्वांट में पास का क्वेश्चन गलत हुआ तो सॉल्व कर लेंगे वापस, ठीक हो गया, दैट्स फाइन, न्यू द कॉन. बट वीआरसी में ना इट वर्क्स अलॉट एक्चुअली. तो मॉक, एवरी मॉक के बाद ना स्पेंड at least couple of hours on only on VARC. कि whatever questions you did wrong, मतलब obviously you'll solve all the non-attempted and wrong questions, right? But जो especially जो wrong हुआ था ना, वो क्यों wrong हुआ था, right? So that's why I say, because देखो VARC ऐसा चीज है ना कि for 99% of the जनता, right, they will not have that 95% accuracy in VARC. ठीक है, तो इसलिए I told that attempt more in VRC, है ना, 25 से attempt ऊपर attempt रखा करो हमेशा, right? तो even if अगर 7-8 गलत भी हो जाए, so you have that margin, right? मैंने बहुत लोगों को देखा है कि they go very, because they are very skeptical, right? They mark in CAT 18-19 questions in VRC. अब 18-19 क्वेश्चन मार्क किया, अगर 5-6 गलत हो गया तो फिर आप रेस से बाहर हो फिर तो, राइट? तो अगर 25 क्वेश्चंस किया है तो इवन इफ अगर आप 7-8 गलत कर लेते हो फिर भी आप रेस में हो, right? So this like, so make this a habit from mock only, attempt more, right? And you will maybe you will make more wrong answers, right? ठीक है, but you analyze more कि अपने गलत मार्क के साथ, ठीक है, तो ये ज्यादा एक ये, that's my way of tackling VRC, right? But maybe every verbal faculty will not agree it, right? So इसलिए better है कि verbal faculty से इनका ले लेना, ठीक है, but that's my way. बहुत लोगों को हिट कर जाता है, right? तो मैं ऐसे करता हूँ कि मैं ज्यादा गलत करूंगा मॉक में तो ज्यादा एनालाइज करूंगा मैं VRC को, और मैं कैट अटेम्प्ट ज्यादा रखूंगा. 20 अटेम्प्ट, if I give cat, if I've given cat, I'll never attempt 20% VRC or 34, right? I would attempt 80% of the questions in VRC. I would attempt more. And ऐसा नहीं कि मैं वहीं पे आके अटेम्प्ट कर रहा हूँ, for that I'll practice, right? I'll practice in mocks also कि 25 क्वेश्चन में मॉक में करूँ तो ऐसा हो जाता है कि मैं 15 रॉन्ग हो, right? So अगर मैंने 15 रॉन्ग से स्टार्ट किया था तो मेक श्योर दैट इन लास्ट 4-5 मॉक मेरे 4-5 रॉन्ग हो रहे हैं, ठीक है? So start, maybe you're starting from 30% accuracy, 40%, it's fine. मैंने बहुत लोग रिजल्ट शेयर करते हैं मॉक के, हार्डली 30% क्वेश्चन बहुत लोग करेक्ट करते हैं. मतलब 25 में बोलता हूं अटेम्प्ट करने के लिए, कर दिया 25 अटेम्प्ट, देखो बस 6 और 7 गलत है, सही है, राइट? 18 गलत है, but that's fine, right? And I've seen that nowadays they're getting 15-16 correct now after 6-7-8 mocks, right? So similarly till CAT they want to reach to till 20. तो अगर VRC में 25 अटेम्प्ट करके अगर 20 करेक्ट कर लेते हो आप, राइट, that's a very good actually, ठीक है? So be aggressive. How many to attempt in LRDI section? मतलब 5 सेट्स तो बिल्कुल करना ही चाहिए, ठीक है? देखो अब ये नहीं बोल सकता, इट डिपेंड्स ऑन डिफिकल्टी लेवल, राइट? ठीक है, बट सीइंग द पेपर इन लास्ट 3-4 इयर्स, सो आई वुड से कि 5 सेट्स हो जाना चाहिए, ठीक है? एंड पीपल आर डूइंग इट, राइट? मतलब मैं देखता हूँ मॉक्स के रिजल्ट ना, सो ऑल आर डूइंग इट, ठीक है? दे शेयर इन द ग्रुप, राइट? एंड दे आर सॉल्विंग मतलब 4 and 5 सेट्स, मतलब आराम से सबके 40-50 मार्क्स रहते हैं LRDI में. सो सॉल्व दैट मींस दिस, इतना प्रैक्टिस करने का फायदा हो रहा है LRDI का, ठीक है? They're working good. So just make sure that you're attempting good numbers, and it still depends on difficulty level also, right? As it is possible that if you give LRD, if you go to CAT, right, and there may be scenario कि LRD बहुत tough है इस year, right? तो हो सकता है कि 3 कुछ सेट्स करने पे भी 98 आ जाए, ठीक है? That you have to judge there, right? So ये आप कब जज कर पाओगे ना? When you're in good practice, right? अच्छे practice में रहोगे, जब solved 400-500 sets before, right? तब जाओगे तो you can see, you can judge there कि okay, नहीं, set is tough, मुझसे नहीं हो रहा है तो और लोग से भी नहीं हो रहा होगा, right? So just calm down yourself and just bring down that 1 or 2 sets less, right? But seeing the pattern जो चल रहा है, I think कि all 8 sets cannot be tough, right? तो 2-3 बहुत tough होते हैं, 2-3 mediocre होते हैं, 2-3 tricky होते हैं, right? So mediocre और tricky वाले पे हमारा ज्यादा focus रहता है, ठीक है? कि वो sets हम crack कर ले, right? So 5 sets I would say कि target करो mock में. mock अगर आप mock में 4 कर लेते हो very good, right? तो ट्राई करो कि मॉक में 4 वी कैन डू, बिकॉज मॉक ऑब्वियसली इज टफर देन कैट, राइट? एंड इफ यू कैन डू कंसिस्टेंटली 4 सेट्स इन मॉक, एंड अगेन दोस 4 सेट्स व्हिच आर नॉट डन कम एंड सॉल्व after mock, right? Okay, then the LRDI I think should not be a worry actually. It should be good. Yes. And frequency of mocks now going forward. Frequency of mocks.
या कितने देना चाहिए अभी हफ्ते में? How many have given till now? 6-7 maybe. ठीक है. Let's say abhi if you are scoring decent enough in mock, right, so you can let's say ki in October is until till let's say 1.5 month before CAT na, till 15th October you can just give a mock every third day, right? जैसे मान लो day number 1 है, right? So day number 1 जैसे आज आपने mock दिया तो give a mock on day number 1, right? Then analyze it. तो आज मैंने mock दिया 9 to 12, ठीक है, फिर मैंने VARC analyze किया, ठीक है, then I solved all the questions also, then Quant and LRDI same, right? Basically whole day निकल जाता है mock देने में, ठीक है, जिस दिन mock देते हो आप, right? So that you're solving those 102 questions of mock, right? Maybe 15 mock, 50 after mock, right? But that day make sure to solve those 100 questions, right? तो वो 100 questions solve करोगे, ठीक है, mock में. Then next day, next 2 days work till 15th October at least, right? Next 2 days work on your mistakes, right? Basically mock then mock should be more exciting, right? तो mock का बहुत overdo भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, कि every second day mock दे रहे हैं, right? So it can't continue, right? It will cause a fatigue, right? So you don't want to cause any fatigue together, right? So next 2 days, so the way I've told to analyze mocks, ठीक है, that वो मैंने Excel sheet बनाऊं, ठीक है, then note down the points also, right? And then you see कि क्या क्या mistakes है, so work on those for 2 days. Let's say कि you analyze that कि आपका arithmetic थोड़ा weak है या maybe LRDI और practice है, right? So work on those 2 days, ठीक है, and again give mock on 4th day. So day 1 mock दिया, next mock day 4, next mock day 7, next mock day 10, right? चलें तो till 15-20 October, right? And after that, if you feel you're now good and comfortable, right, between, there's no specific rule for it, right? So somewhere between 15th October to 30th October, if you feel that you are now good enough, right, कि सारा content पढ़ लिया है, now you are scoring decent in mocks, do it all every alternate day, ठीक है? So maybe 1st November से 1st, 3rd, 5th, 7th, 9th, right? But जब भी लगे कि fatigue हो रहा है ना, तो give a pause, ठीक है? ऐसा नहीं कि just go on doing it, right? वही बात है. Even if Virat Kohli plays a one-day match daily, he can't do very good, right? ठीक है? So 3-4 दिन का रेस्ट चाहिए होता है, हर चीज प्लान करना होता है ना, तो वीकनेस पे कुछ प्लान पे, राइट? जस्ट गिव अ प्लानिंग, राइट? तो ऐसा कोई बहुत नहीं है कि 100 मॉक्स देना है या 60-50 मॉक देना है. इफ यू आर कंफर्टेबल यू गिव 50, राइट? बट एटलीस्ट 25 to 30 देना चाहिए, ठीक है? So between 30 to 50 it varies, right? It depends upon person, right? But even if you're not giving mock, ठीक है, सपोज आपने 2-3 मॉक ले लिया है and your mocks are saved, right? मॉक पूरा यूज नहीं हो पा, use that as sectional. मैंने बोला ना कि in this 80 days, right, try to solve 30 quant question every day, at least 5 LRDI sets every day, right? तो उन mock को as अपने questions use कर लो, right? कि ठीक है, ये mock suppose जो take home mocks होते हैं, there are many take home mocks, there are many sectionals also, right? तो take it as like उसको ना ऐसे ही per day practice में खत्म कर लो, ठीक है? So you can do that, right? Let's say कि आपने decide किया कि I am feeling not good in geometry and algebra, ठीक है? So next 3 days ना क्या करो कि just filter, जैसे जो sectionals होंगे ना, so next 3 days के लिए आप अपने sectionals से just geometry and algebra के questions filter कर लो, right? So at least every mock में 15 questions तो होगा geometry algebra का every sectionals में, right? On an average, तो 4 sections से 60 questions ले लिए, ठीक है? And do it in next 3 days, 60 days, right? If you feel that you're not going good in geometry and algebra, अगर अच्छा नहीं कर रहे आप, right? So do it for next 3-4 days, ठीक है? वो काम कर लोगे आप, then you again feel confident in that chapter, right? So just try to make sure कि अंत तक आपके अगर सारे मॉक्स नहीं यूटिलाइज हो पाने, but you're practicing those questions at home, ये कर रहे हो. Yes sir. ठीक है? Tell me any more doubt? No more doubts. ठीक है, बस तो चलो अच्छे से पढ़ो, राइट? यू कैन ऑलवेज रीच टू मी, कोई डाउट है तो ओके, कोई इशू हो बताना, ठीक है? कीप शेयरिंग योर स्कोर कार्ड, ऑल्सो स्कोर कार्ड शेयर करना टेलीग्राम में, ठीक है? एंड डू लेट मी नो दैट व्हाट आर योर रीसेंट परफॉर्मेंस इन सितंबर, है ना? ठीक है, एंड चलो पढ़ो अच्छे से, ऑल द बेस्ट. थैंक यू. ओके, स्टडी मोर, ठीक है? दैट्स व्हाट हेल्प्स these days, राइट? ओके, चलो बाय बाय आकाश. बाय, थैंक यू.